Assalamualaikum. Welcome to Miracles. Now we're going to study renal artery stenosis. As the name suggests, there is decreased supply to the kidney secondary to stenosis. So what might be the causes? Common जो हमारे पास आता है ना, that is atherosclerosis. इसका मतलब है कि these are mostly in the old obese patients या जिनको पहले से हमारे पास हाइपरटेंशन भी होगी, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा, वो हो सकता है. तो ये हम बात कर सकते हैं कि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर if there is a renal artery stenosis that might be secondary to atherosclerosis. लेकिन अगर यंग पेशेंट के अंदर आए तो कोई ना कोई हमारे पास कंजेनिटली तौर पे या कोई हमारे पास फिजिकली तौर पे कोई स्ट्रक्चरली हमारे पास कोई डिफॉर्मिटी होगी लाइक फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया. थिक इंटिमा. These are usually in the young patients. Now अभी हम ये तो हमारे पास कॉमन चीज़ें आ और हमारे पास क्या हो सकता है मस्कुलाइटिस इवन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और एनेरिज्म. So how a patient of renal artery stenosis usually presents? The common presentations हमारे पास जो आती हैं that is uncontrolled hypertension. That is usually the presentation that is not controlled even by multiple drugs. दूसरी हमारे पास ये चीज़ हो सकती है that is the patient young and he presents with acute pulmonary edema. Investigate the cause और हमें पता चलता है कि that is secondary to this. अगर ये सारी बात करें हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें होता क्या है, हम उससे पहले जाते हैं. What actually happens? Pathophysiology में अगर आप देखें हमारे पास renal artery stenosis है. It means there is renal ischemia. When there is renal ischemia, then there is increased swelling. यानी हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है of renal angiotensin system, angiotensin aldosterone system. इसकी वजह से हमारे पास सोडियम और वाटर की डिटेक्शन होती है प्लस हमारे पास पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है. Due to sympathetic overstimulation as well, तो हमारे पास हाइपरटेंशन है. तो एक मैनिफेस्टेशन हमारे पास आ गई हाइपरटेंशन. दूसरी ने बात की यही फ्लूइड ओवरलोड को हम लेके हैं तो हमारे पास पल्मोनरी एडिमा आ जाता है. और तीसरा हमारे पास कभी होता है कि हमने क्या किया कि वी पेशेंट कम्स टू अस विद hypertension and we started him on ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers. अगर angiotensin receptor blocker को इस सिस्टम को आप बंद कर देंगे तो ज़्यादा आपके पास क्या होता है एक्सक्रीशन नहीं होती, आपके पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम कर देता है तो आपके पास क्रिएटिनिन राइज करने शुरू करता है. ये नॉर्मली भी इट हैपेंस लेकिन इज यूजुअली लेस देन 30%. क्रिएटिनिन आपका जो राइज होता है आफ्टर स्टार्टिंग एस इनहिबिटर यूजुअली 30 लेस देन 30% एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. लेकिन यहाँ पे क्या होता है देयर इज जो क्रिएटिनिन रेस है दैट इज ग्रेटर देन 30%.
तो deranged renal function tests आपके पास आ सकते हैं after starting antihypertensives, usually the ACE inhibitors on the ARBs. Now, if you suspect that the patient has renal artery stenosis, आपका patient hypertensive आया, तो how we examine the patient? Examination आप पता है कि हम जब ब्लड प्रेशर पेशेंट का लेते हैं, हमें ब्लड प्रेशर में टाइम ग्रेटर देन 140/90 आ रहा है हमारे पास और कोई मैनिफेस्टेशन आ जाती है ऑफ हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया लाइक नो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे वी गेट द renal rule कि renal artery stenosis की वजह से there is turbulence to the blood flow और इसकी वजह से हमें renal growing मिलती है in the renal angle. अब how to investigate such a patient? इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमारे पास इमेजिंग की हैं एंड द अदर वन दैट यूजुअली आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस. उसमें अगर हम सोचें तो द रेनिन लेवल्स these are increased and then if we go for the imaging studies, the ultrasound abdomen simple, it shows the decreased renal size of the affected decreased size of the affected kidney. Decreased supply, the kidney size decreases. दूसरा, to check the flow, हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का ऑर्डर करते हैं of the abdomen, it shows decreased flow. और इसी को हम मजीद देख सकते हैं by other radiological हमारे पास जो modalities है like CT angiogram और magnetic resonance angiography. ये स्ट्रिक्ट हमने शुरू से स्टार्ट किया लेके चलेंगे. हमारे पास एसोसिएटेड सपोर्टिव क्या चीज़ें आ सकती हैं. हम जानते हैं कि रेनिन लेवल चल रहे हैं, हमारे पास को हाइपर एंडोस्टेरोनिज्म है. तो अगर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, these are indications of supportive. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास क्या होगा, the sodium levels are high and the potassium is low. So how to treat such a patient? We control the blood pressure. Usually we don't use the ARBs or ACE inhibitors. We can go for the calcium channel blockers, we can go for the diuretics. दूसरा, हम जानते हैं कि मोस्टली जिस हमने कॉजेज की बात की थी सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ऐसे पेशेंट में कोई एडमिनिस्टर स्टैटिन्स देखिए वेंटिलेटर्स एज वेल. एकदम बात आती है आपकी, अगर the BP is not controlled, the target is not met, then what would be the next step? Then the second जो आपके पास intervention है, intervention के option that is angioplasty. लेकिन कब करेंगे? What are the indications for intervention? ये सोच होगी when the patient has uncontrolled hypertension by multiple antihypertensive or even or the patient has malignant hypertension.
If this uncontrolled hypertension has led to flash or the acute pulmonary edema, multiple episodes, or if this uncontrolled hypertension secondary to the renal artery stenosis has led to the chronic kidney disease, the renal function deterioration, until the renal compromise is better. The fourth, as we know, in young patients can the cause is usually fibromuscular dysphagia. A patient with less than 40 years of age, we can go for intervention. So this is all about renal artery stenosis. Thank you very much.